Now, in today's session, you might find certain things that I know, but I want you to not think that you know that. Because had you known all of this, you would not be joining a session to learn. I'll tell you from my experience. I have learned one same concept from multiple people. And every time I go to a session, I empty the cup. So I use this strategy. My mind is like a cup. If it is already filled with tea before, that yesterday I attended Abhishek's session and he taught me about personality development. And if I go with that assumption that today Navneet is taking a session on personality development, and I know all of that, and I am just looking for something new from Navneet's session today. And 1 hour passes by, and I'm like, Navneet told everything that I knew already. What was new in that? The thing is, there were many new things in the way Navneet explained me, and they might be quite different from what Abhishek explained. But because I had this assumption in mind that I know everything, I know about it. I came with that intention. I kept my cup. Cup is my mind. I kept that as full. I did not empty it before coming for Navneet's session. So I will not have any takeaways from the session. So if you know something about personality development, well and good, but come like a curious child and know that you're going to find a lot of things from the session. But if you think ये तो मुझे आता है, ये तो बहुत common topic है, then you will say, ma'am, I knew everything. What was new in this? So the way I'm going to teach you, that can be new today. Okay, so you have to observe me very carefully. So I will give it over to Abhishek. You can start. Yes, ma'am. Ma'am, I am sure that the participant will do it the same. Okay. So hello participant, I would like to start this international webinar with this special quote that is success usually come to those who are too busy to be looking for it. And so starting a new chapter, I, Abhishek Kumar, being your host, want to extend a very warm welcome and very good evening to all of you present here, and I hope you all are doing amazing. So on the behalf of the SEMS family, I welcome you all for this international webinar on the topic personality development for the personal and the professional achievement. And we embark a journey of the self discovery transformation, as we have to get the strategies insight that can develop both personal and the professional life. So just be there. And to add our guest of honor and our speaker, Ms. Tanya Bhatia, ma'am, and it's a great honor to have you with us, and we are very much thankful for your presence. Okay, now let me introduce our speaker to you all, Ms. Tanya Bhatia. Ma'am, as talking about her is that she is a life and mentor coach. Apart from that, she believes her that every outer transformation need to start with the inner transformation. Apart from that, she has a journey of the work which bring transformation in the personality by changing the constant negative aspect to a stronger belief. And she has also done one-to-one coaching session. Apart from that, she believes in the development of the things like full, confident, and peaceful. Speak with the confidence. Apart from that, exhale the self-doubt, inhale the confidence, skyrocket to your things, and lots more. Now, over to you, ma'am. Okay. Thank you so much, Abhishek, for that introduction and welcome. The motto that I live by is inhale confidence and exhale self-doubt. Can everybody sit straight and inhale white confidence inside you? There's a white confident light traveling inside you from your crown chakra, and it's passing through your forehead. It goes into your nasal and it stops here. You are inhaling white light, confidence, and now exhale everything that happened today which is not serving you. Exhale the self-doubt. If there's any doubt going in your mind, how will I do this? How will I achieve this? How will this happen? Any kind of self-doubt, exhale it. Exhale it. Release it before we start the session. Okay? So inhale confidence and exhale self-doubt. Now, why have we chosen this topic, personality development, for personal and professional
success. Is there anyone who would like to share their inputs on why do you think we have selected this topic for today? Anyone? Just one person. They can raise their hand and they can share their inputs. What is personality development according to you? Ma'am, I think that as per my opinion is that first impression is your last impression. So we should be try to get that right. Okay. Thanks, Abhishek. First impression is definitely the last impression. I also believe that with time, the impression keeps changing. But yes, it's very important to first master the first impression, because if the first impression goes a little downward, the other person whom we are meeting, either in our personal life or professional life, will actually not think very highly of, right? So first impression may not always be the last impression, because even after first, second, third impression, somebody can develop a good impression of that person. But if the first impression goes wrong, then no matter how qualified that one person is, the other person may not give the opportunity to that person to come in service for that person. Okay, so I will give you one example. I once went to a doctor for some treatment, and they had actually taken the retirement at that time, and then their daughter was looking after the clinic, and she used to sit in the clinic. So I was taking some kind of medicines from there, and after the regular intake of medicines for 2 to 3 months, the problem which I never came with, that got resolved, because we discovered that okay, this was also existing, that got resolved. But the problem which I wanted to resolve, that could not really happen. We could not see that progress. So I requested them to please call their father, who used to sit in that clinic for a long time. But just recently, when I started taking the treatment, they retired from there and they did not sit in the clinic. So when one day they called the doctor, and then I went and I spoke to them, and I did not like their first impression at all, because they were very renowned in their field, very renowned, and the kind of medicines they had given to their patients, it actually worked wonders. But the only thing that I did not like about that first impression was the way they behaved. Now, what do I mean by behavior? The way they were sitting, the way they were communicating, the way they were using their body language, the way they were using their non-verbal communication, all of that did not resonate with me. They were not listening to me. When I was telling them my concern, they were not ready to listen, and they were telling me whatever they knew. So one thing I felt is that they are not listening to the patient. They are just going with the assumption. The second thing is, I did not find the behavior very professional. It should be professional, but it was like a very, I did not like that kind of it. I didn't find that professional. So because in that 10 minutes of interaction, I did not like interacting with them, I did not want to continue the treatment. So finally, after 2 months, I stopped taking medicines from that particular institute wherever I went, and I decided that I'm going to go somewhere else, and I'm going to work on my own. So this is the power of the first impression and the personality. अगर आप बहुत highly educated हैं, आपको बहुत सारी चीजें आती हैं, लेकिन अगर आपका first impression सामने वाले पे अच्छा नहीं जाता है, then in that case you're going to lose a lot of opportunity. मैं तो इसी intention से I went to that particular clinic, thinking that everybody in the place knows that doctor, and they have cured so many patients of so many severe diseases. I didn't have any disease. It was just a minor problem that I was facing. But despite knowing all of that, I couldn't resonate, because I did not find the behavior professional, and I did not like that they were not listening to me. They were just giving their suggestions and telling me to follow the medicines, not even ready to listen whether I had taken that medicine before or whether there's something to be changed. So what a patient expects is that the doctor listens to them, right? So this is the importance of your personality. और यही determine करता है कि whether you're going to form good relationships with people in your personal life and your professional life. आप बहुत
हाईली एजुकेटेड, हाईली क्वालिफाइड हो सकते हैं, बट अगर आप लोगों को हमेशा क्रिटिसाइज करेंगे या ब्लेम करेंगे, या फिर आप हमेशा नेगेटिव बातें करेंगे, या आप गॉसिप करेंगे, या फिर आप किसी की बात को सुनेंगे नहीं, इफ यू विल नॉट लिसन प्रॉपरली, देन द अदर पर्सन will not think very highly about you, and they might not want to do any business or any sort of maintain any professional relationship with. So ये बहुत important है कि how you represent yourself in the society, how what is your personality, because आपकी जो personality होती है वही आपकी personal reality बन जाती है. I will give you one more example. I have a group of people that I know, and whenever I meet, they're always gossiping about the third person. Okay, and I don't like that, because that's a waste of time. Why do you have to speak about someone negative in order to feel yourself better? So I don't give my opinions and inputs in that particular group, and I always try to divert the attention towards something positive. And now just imagine if somebody is always speaking negative about the third person, they can't speak all of that in front of that person, but they are always creating those rumors and trying to pull someone's leg. Then what kind of impression is it putting in front of people? Can anyone answer this? Ma'am, I think that as per my opinion that he don't want to understand the things of the other people. As per my opinion, I think so. Okay. So ये सारी चीजें हमारी लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम कैसे बात करते हैं, हम पॉजिटिविटी फैलाते हैं या फिर वी आर स्पीकिंग ओनली नेगेटिव, राइट? आर वी वांटिंग टू अंडरस्टैंड द अदर पर्सन, या फिर हमें बस अपनी ही बात बोलनी है एंड देन वी वांट टू प्रूव दैट आई एम राइट? ऑल ऑफ दिस काउंट्स इन द पर्सनालिटी. तो जो हमारी पर्सनालिटी होती है वही हमारी पर्सनल रियलिटी बनती है, एंड दैट इज व्हाई आई हैव चोजन दिस टॉपिक टुडे, बिकॉज पर्सनालिटी is the personal reality. Yes, Navneet. Ma'am, we have the reply to your question in the chat box as well. Okay. Chibolu Manasa. Okay. She gave you the reply that they get habituated to that. Yeah. Thank you for answering that. Yes, you're very right. If there are a group of 5 friends and all the 4 friends, whenever they meet, they're trying to pull someone's leg. They're trying to spread rumors about that person. Why do people do that? Why do people criticize, blame, and complain every time? Because either they do not have goals in life, they do not have a set purpose, and their only thing is to pull the other person down and feel good about themselves. And kya hota hai? This results in wastage of time. There's nothing productive that happens. And people get addicted to complaining, blaming, and criticizing other people. So this is also not a very good part of the personality. So if you find yourself stuck in that situation where you're complaining, where you're blaming, and where you're constantly criticizing people, no matter how they are, okay, if you go into that habit once, twice, believe me, it's going to become a vicious cycle. And then people will not like interacting with you because your personality is not reflecting a positive behavior. So ये हमारी बहुत important बात है. Personality is your personal reality. Okay. So let's move on to the next slide. Why we are discussing this particular topic. Yes, I think Chibolu Manasa has raised their hand. Yes, do you want to speak something? Yeah, I would like to ask a query. May I? Yes, please go ahead. Yeah, ma'am, actually in the workplace and all, we couldn't find all the type of, positive vibes and all. As you discussed, like a group of young people may have with a negative mentality all the time. They try their level best to criticize someone else or let down someone else. So anyway, we couldn't change them. It's because they're already habituated from this kind of situation from many years. So because of them, we couldn't change our job or we couldn't switch to other options because it's mandatory for us. So is there any proper way to keep them aside or corner them aside and just to focus on our goals? How we supposed to make? Okay. If you feel that they keep on spreading negative energy, toxic, it's called basically toxic positivity. They might be very good with you, but they might be speaking negative about other people all the time. And if you feel drained in your energy, it's very important that you maintain boundaries with them. Okay. So you may not want to spoil your relationship with them, because when we are working in a workplace, it's very essential that we have good relationships with everyone around.
You don't Exactly. have Yeah. to maintain that negativity with them. But if you feel that if you're sitting somewhere and they are gossiping and talking, creating rumors, and you feel that you don't want to participate, don't be a participant in that. You can be a silent observer. And somewhere, if you feel that you get an opportunity, you can interrupt in between and try to change the conversation to something positive. Now, they might not notice all of this in one go, but if you keep a very clear intention in mind that for the next 7 days, I am going to portray a very positive behavior in front of these people, and let me take up the responsibility that my behavior is going to change them somehow. Not 100%, maybe just 5%. So I will say set the intention. Set the intention that for the next 7 days, what I say, how I behave, I am going to do everything very positively, and I know that my words have power, and because I will do that, they will also catch that vibration. I'm not saying they will get 100% transformed, but maybe 5%. So try doing that, and don't be, it's very essential not to get yourself involved in that. Sometimes if you feel that it's resulting in a wastage of time and you don't want to be there, just make some excuse and you can drift away from that particular physical place as Yeah. well, right? Thank you, ma'am. Okay, thank you for asking. Yeah. So why we have chosen this topic is that the better you develop your personality, the lesser time it takes to achieve your goals. आप जितना ज्यादा अपनी personality पे काम करते हैं, अपनी internal और external, तो आपके goals को achieve करने में बहुत ज्यादा कठिनाई नहीं होती है. It takes less time to achieve your goals, right? Let's look at some examples in the further slides. Okay, yes. So this slide says you didn't come this far to only come this far. Now, can I see in the chat box what is the average age of the people who have joined this session? The average age, like everybody can just write their age so that I know who is a student and who is a professor or a teacher here. Let's suppose the average age is 20, 22, okay, 28, 35, 22, 28, 42. Okay, thank you so much. So, हम जहां भी है लाइफ में अभी, चाहे हम 25 के हैं या 45 के हैं या 50 के हैं या 60 के हैं, we have not come this far in life to only come this far. अभी भी बहुत टाइम है, okay? We know that we have to live for even a longer time. So, हम जहां तक आए हमें उसके आगे भी जाना है. तो अगर हमने आज तक अपनी पर्सनालिटी पे काम नहीं किया था, if till today we did not consciously work on our personality, then can we not at least try to work on our personality from today? क्योंकि अभी भी देर नहीं हुई है. It's not very late. Some people think that they are in their 30s and 40s and now they can't change their behavior because their behavior is coming from their childhood. No, if you make a conscious decision कि मुझे अपना mindset change करना है, I need to change my mindset, I need to change my personality, the change will come because your mind is very powerful. If you decide that you are going to change your personality for your better growth, for your better relationships, then definitely you can make a change. Okay, so okay, thank you so much for interacting in the chat box. So you didn't come this far to only come this far. अभी इसके भी आगे जाना है. Okay, so make an intention that you need to first impress yourself. अगर आप मिरर में खड़े होके अपने आप को देखो तो आपको लगना चाहिए कि yes, I have that personality, I have that good personality. I spread positivity everywhere. I am confident and nobody's words can impact me and nobody's words can demoralize me. And I will not allow toxic people in my life to ruin my life. And I will not spread toxicity around people. आपका ये intention होना चाहिए. अगर आप ये intention रखेंगे तो आपकी personality में 4 चांद लगने में ज़्यादा time नहीं लगेगा. Okay, so let's go ahead. Okay, knowing others is intelligence. Knowing yourself is true wisdom. How many of you agree with this? If you agree, just type A in the chat box. कि दूसरों को अगर हम जान ले, like suppose if I speak to Navneet for 1 hour and I can then speak, Navneet was like this, she was saying this, that's intelligence. But अगर मैं नवनीत में 100 कमियां निकाल लूं लेकिन मुझे अपनी कमी ना पता हो, that means I don't have wisdom, I just have intelligence. Okay, और अगर मुझे नवनीत में कुछ अच्छा दिखाई देता है
तो मैं वो तो कह दूंगी नवनीत इज वेरी काइंड, नवनीत इज सो सोफिस्टिकेटेड, नवनीत इज सो हेल्पफुल, शी वाज वेलकमिंग मी सो वेल इन दिस इवेंट. बट अगर कोई मुझसे पूछे दैट मैम कैन यू टेल मी योर 10 गुड क्वालिटीज, योर 10 स्ट्रेंथ्स, और मुझे वही नहीं पता, मैं कहूंगी अच्छा 10 स्ट्रेंथ्स, 1 आई नो बट 10 तो बहुत लंबी लिस्ट है. फिर मैं बोलूंगी अच्छा नहीं, आई नो सेकंड आल्सो, आई नो थर्ड, या आई नो 3. मुझे अगर 10 ही नहीं पता है, then do I know myself? So knowing yourself first is wisdom. Okay, thank you. Sometimes self-reading is the best option. Yes, thank you for mentioning that. So knowing others is intelligence. हमें लगता है कि हम लोगों के बारे में बातें कर लेंगे और लोगों के बारे में पता कर लेंगे तो वो हम बहुत इंटेलिजेंट हैं. We are definitely. बट कभी हमने खुद पे रिफ्लेक्ट करके देखा है कि हम कौन है, राइट? सो दैट इज कॉल्ड ट्रू विजडम. एंड दिस कोट इज नॉट गिवन बाय मी, आई विल टेल यू हु इज इट बाय. इट इज बाय लाओ जू. ओके, सो ही सेड that knowing others is intelligence, knowing yourself is wisdom, mastering others is strength. जब हम dominate करते हैं ना कभी किसी ग्रुप में, चाहे फ्रेंड्स के साथ हो या प्रोफेशनल लाइफ में, वी ट्राई टू डोमिनेट कि ओके आई एम द मैनेजर, आई एम द लीडर, यू नो टुडे आई विल ट्राई टू डोमिनेट द कन्वर्सेशन. दैट इज कॉल्ड हैविंग स्ट्रेंथ, बिकॉज देयर आवर ईगो कम्स इनटू पिक्चर एंड वी वांट कि सब बस मुझे ही सुने और मुझे ही फॉलो करें. बट जब हम खुद को मास्टर करते हैं, वो ट्रू पावर है. दैट मीन्स कि अगर सामने वाला आपको प्रोवोक भी कर रहा है, कुछ ऐसी बात कह के जिसमें आपको बहुत गुस्सा आ रहा है, तो आप भी गुस्से में रिएक्ट करेंगे, तो वो आपकी स्ट्रेंथ है, क्योंकि आप मास्टर कर रहे हो दूसरों को. बट अगर आपने ये समझ लिया कि सामने वाला गुस्सा कर रहा है तो वो नादान है, दे डोंट नो एनीथिंग बेटर, और गुस्से को गुस्से से ठीक नहीं किया जा सकता. अगर आपके कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है और सामने वाला गुस्सा कर रहा है, तो आप शांति से भी उसको हैंडल कर सकते हो. आप में वो विजडम होनी चाहिए. लेकिन अगर दोनों लोग चीखेंगे, चिल्लाएंगे, तो दोनों की पर्सनैलिटी रिफ्लेक्ट हो रही है. एंड उससे क्या होता है, हम कभी अपने ऊपर मास्टर नहीं करते. हम कहते हैं सामने वाले ने ऐसे बोला और मुझे प्रोवोक कर दिया, मुझे तो गुस्सा आ गया, मैं क्या करूं, व्हाट विल आई डू हियर. सो वी ऑलवेज ट्राई टू मास्टर अदर्स, और फिर इसलिए हम भी चिल्लाने लगते हैं. वी ऑल्सो बिकम अग्रेसिव, वी बिकम एंग्री. तो हम वहां अपनी स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं. लेकिन जिस दिन हमने ये सोच लिया कि सामने वाला चाहे कुछ भी करे, इफ योर ट्रू सेल्फ इज बीइंग पीसफुल, अगर आपका ट्रू सेल्फ है कि आपको पीस से ही सारी चीजें सॉल्व करनी है, तो आप खुद पे मास्टर करने जब लग जाओगे, तो वो आप अपनी पावर में आ जाओगे. आप जब अपनी पावर में आओगे, आप वही पावर दूसरों को भी आप स्प्रेड करोगे. अनकॉन्शियसली यू विल स्प्रेड इट टू अदर्स, बिकॉज बाकी लोग बोलेंगे कि मैं तो ये चाह रही थी कि मैं इन पे गुस्सा हूं तो ये प्रोवोक हो जाए, लेकिन अगर आप प्रोवोक ही नहीं होंगे तो उनकी सारी पावर चली जाएगी. सो मास्टरिंग योरसेल्फ इज ट्रू पावर. और जब हम ये चीज करते हैं, जब हम खुद को जानते हैं, वी आर ट्रूली डेवलपिंग आवर पर्सनैलिटी. तो अगर आपको आज से अपनी पर्सनैलिटी पे काम करना है, तो दूसरों पे ज्यादा ध्यान नहीं देकर खुद पे ध्यान देना है. एंड इफ यू फाइंड समवन हु इज डूइंग बेटर देन यू इन योर लाइफ, इन देयर लाइफ, गेट इंस्पायर्ड बट नेवर जेलस. कभी जेलस मत होइए. अगर आप जेलस होंगे, आप अपने अंदर नेगेटिविटी क्रिएट करेंगे, और फिर आप नेगेटिविटी ही अट्रैक्ट करेंगे अपनी लाइफ में, और आपकी पर्सनैलिटी डेवलप नहीं हो पाएगी. लेकिन अगर आपको कोई लग रहा है कि कोई आपसे बहुत अच्छा है प्रोफेशनल लाइफ में, या किसी के पास बहुत आपसे बेटर जॉब है, आपसे ज्यादा पैसे हैं, या दे आर हैप्पियर देन यू, जस्ट ब्लेस देम. जब आप उन्हें ब्लेस करने लग जाएंगे और आप उनसे इंस्पायर होंगे, उस दिन यू विल मास्टर योर पर्सनैलिटी. वो आपकी रियल पर्सनैलिटी है. ओके, सो let's move on to the next slide. So that's something about me. I majorly work as a life and mindset coach and confidence coach. And these are a few ways I help people. I help people to deal with their negative thoughts and emotions. I help people to deal with low confidence, fear and anxiety. I help people to learn to become happy, peaceful and courageous. Why I have written learn? क्योंकि ये एक आर्ट है. There are many times even I am not happy 100% times. I am not peaceful 100% times. But all I do is I strive to reach there. So I will never say that if you work with me, I will make you 100% happy, peaceful and courageous. I will definitely improve your skills from here till here. But life is life. It throws obstacles. और कभी ऐसा होगा आप अनहैप्पी और आप लेस पीसफुल भी फील करेंगे, एंड दैट्स एब्सोल्युटली ओके, बिकॉज इट इज अबाउट बीइंग human. And the last, I help people to become confident communicators. तो अगर आप first 3 points note करोगे,
नेगेटिव थॉट्स एंड इमोशंस, हमारी पर्सनैलिटी कहाँ पे डेवलप होती है? सबसे पहले हमारे माइंड में. That is why I help people to first deal with the negative thought process and the emotions that they are carrying. अगर कोई भी मेरे पास आता है कि मैम प्लीज हेल्प मी, आई हैव दिस इंटरव्यू और आई एम लुकिंग फॉर प्रमोशन इन माय ऑर्गेनाइजेशन, आई वांट टू लर्न हाउ टू improve my personality so that people listen to me. सबसे पहले I don't work on their outer skills. That's very fancy thing कि आप आओ अब मैं आपको बताऊं कि आप ऐसे ऐसे वर्ड्स यूज करना अपने टीम के साथ, you will impress them. उन वर्ड्स का कोई फायदा ही नहीं होगा अगर आपकी थॉट प्रोसेस और आपके इमोशंस रेगुलेटेड नहीं है. सो आई ऑलवेज बिलीव कि आपकी पर्सनैलिटी इनसाइड आउट क्रिएट होती है रादर देन आउटसाइड इन. ओके, योर पर्सनैलिटी इज क्रिएटेड इनसाइड आउट rather than outside in. Many people make the mistake of creating their personality outside in. Ki, you know, wear fancy clothes, speak nicely, stand confidently, have good vocabulary. These things are definitely important. I'm not denying that. But अगर आप internally अपने आप को sort नहीं करेंगे, अपने थॉट्स एंड इमोशंस पे काम नहीं करेंगे, इंटरनली कॉन्फिडेंस को नहीं बढ़ाएंगे, अगर इंटरनली कुछ फियर्स हैं आपकी लाइफ में, अगर आप उन्हें हैंडल नहीं करेंगे, तो आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट बहुत ही एक माइन्यूट लेवल पे हो पाएगा, बिकॉज फिर वो एक्सटीरियर लेवल पे ही रह जाएगा. इंटरनली तो आपने अपने आप को सॉर्ट नहीं करा, राइट? सो वी फर्स्ट हैव टू वर्क ऑन द इनसाइड सो दैट इट स्टार्ट्स रिफ्लेक्टिंग ऑन द आउटसाइड. सो आई ऑलवेज से कि अगर आपको कॉन्फिडेंट कम्युनिकेटर बनना है, सबसे पहले अपने माइंडसेट पे काम करो. एंड माइंडसेट क्या होता है? हमारे थॉट्स और हमारे इमोशंस पे हमें सबसे पहले काम करना चाहिए. आपकी इंग्लिश में क्या वोकैबुलरी है? व्हाट इज द वोकैबुलरी यू आर गोइंग टू यूज इन इंग्लिश? हाउ यू आर गोइंग टू स्पीक? हाउ यू आर गोइंग टू प्रेजेंट योरसेल्फ? दैट्स वेरी सुपरफिशियल. वो बात की बात है. सबसे पहले अगर आप अपने माइंडसेट पे, अपने थॉट्स और इमोशंस पे, अपने इंटरनल कॉन्फिडेंस पे काम करोगे, अपने इंटरनल फियर्स पे काम करोगे, तो आपका कम्युनिकेशन जो आउटर है, जहां पे आप लैंग्वेज यूज करते हो, वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव हो जाएगा. That will become very effective. So is everyone clear till here? You have any doubts before I move on to the next section? Okay, so here are a few guidelines that I would like to share. Okay, thank you so much for giving your inputs in the chat box. Okay, a few guidelines from my end. Kindly just follow them. So please participate in the session. It would be highly recommended, like you can unmute yourself and ask your question. And if you're not speaking, please keep yourself muted. Stay focused. Very important. I'm actually giving all the information from my heart. ये PPT तो बनी हुई है, but जो सारा जो मैं आपको बता रही हूँ ना, ये सारा real life experience से है. And I work on this day and night. So I know that if you listen to this very carefully, then you are actually going to have a lot of takeaways from today's session. So please stay focused. Stay till the end. Okay? Do not worry कि time निकल रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है. Just stay till the end. Stay like a curious child. Child क्या होता है? जो 3 years old child होता है, is very curious. He wants to explore the world. So I will ask you to be very curious throughout the session. Just keep on thinking, what is coming next? What is coming next? And in this way, your learning is going to get improved. Okay. And at the end, ask questions. Do ask questions. Okay. Yes. Now we'll go with this icebreaker activity. So I would want you to choose an object which is kept near you and show it to everyone. So in this case, I would want you to switch on your videos, take the object, show it to everyone. For example, this girl in the picture has chosen a file, an orange color file. That is the object she has chosen. Now, you need to describe what is similar between you and that object. I just want your answer in 1 or 2 sentences. And so yes, anybody ready to go first? Let your personality shine now. Don't hesitate, and let's get some good participation today. So, Manasa, Abhishek. Ma'am, I think that Yes. she is carrying some kind of documents. Yes. You tell me what object you are selecting for yourself for this activity, and what is the similarity between that object and between you. I want your creativity to. Okay. Attentive, sincere, hardworking. Okay, I'll show you a demo. I'm selecting a pen for myself. No, not pen, but glasses. These are my glasses. I'm not wearing it for the session today, but I wear it 24/7, except while sleeping.
So why I've chosen this, it is very similar to my personality, because I got weak eyes when I was in 6th grade, but I didn't use my specs at that time because I was very reluctant to use them. और मुझे लगा कि अरे मुझे अभी से ही I'll get the specs, तो ये तो अच्छी बात नहीं है. And when I actually let like 4-5 years pass by, and when I came in 11th grade, at that time my eyesight actually increased a lot. And so I will say I've been using my specs from then onwards. And if I don't use it for a long time, then I don't feel very comfortable. So I will say that my specs are very close to my personality, and that's why we feel like together. Yeah, he or she is my best friend. Okay, so I have chosen this as an object. Which is an object that you would want to choose, Abhishek? Ma'am, someone in chat has also mentioned something, ma'am. I choose pen. I am kicking out the bad habit. Oh, wow. Okay. I think she's not able to unmute herself. She was telling. So, okay. But thank you for sharing. You choose pen as the object because it helps you to quick out your bad thoughts and take my good thoughts in. Wonderful. Beautiful. Thank you for sharing. Anyone else? Anyone else? You can write it in the chat box or just unmute yourself. If you don't want to switch on your video, that's okay. I can't force anyone. Okay. Anyone? Like, I think I have my friends also here, like 2 of my friends. So, yeah, Vandana, would you like to say something? And in this way, you can encourage other people to also participate. Okay, Abhishek, I want you to go ahead with any object and tell me, why do you choose that object? What is similar between you and that object? Okay, ma'am. First of all, ma'am, I have chosen the document or the file she was carrying it. I think that it shows that you are sincere towards your work. Okay, sincere towards the virtual world. Yeah. Okay, great. So Sujata has shared that she has chosen book because she starts reading whenever she feels low. Okay, thank you so much. Hi, Vandana. Yes, you can unmute yourself and you can share which object you would want to choose for your personality. You're not able to unmute? Okay. Abhishek, is there any issue with muting and unmuting? Let me check, ma'am, from my end. Ma'am, I think that they can unmute. Yeah, ma'am, they can unmute me. Yes. Yes, I can unmute now. Okay. This book was lying just next to me. I was actually reading it, and it says a youthful diary. And whenever I am seeking out for any guidance or anything, this is my book written by my mentor. And Okay. it's a very big book. And whatever page I open, I always find it so inspiring and motivating. So I feel like I want to imbibe the guidelines and follow the path of my mentor. I'm his true disciple. Thank you, Vandana. That's so nice. Thank you. So Vandana has mentioned about imbibing that inspiration that she gets from reading the book of her mentor into her personality. That's so nice. Okay. So now if you do not have furthermore, anyone else who would like to share what object they choose for their personality? Okay, I will also choose one more object for my personality, which is this water bottle. And if you can see, I have pasted some points here on my water bottle. So I've written joy, bliss, confidence, peace of mind, happiness. Now, whenever I drink water, my water gets charged with these words. So I like to drink a lot of water because I know it's good for health. And so that is why I think I am able to keep my personality alive by drinking lots of water. And hence I've chosen my water bottle as the object for my personality. Okay. So I am skipping this part and moving on to the next activity. So I would want all of you to close your eyes. Okay, everyone, please close your eyes, just as this person in the picture has closed her eyes and she is feeling calm with herself. This activity is a self-awareness activity. Please keep your eyes closed just for 2-3 minutes and hug yourself. Please hug yourself as you do this activity and close your eyes. Now listen carefully to all the questions that I ask. You don't have to share any answer with me, but as you answer these questions for yourself, you will know how much you know yourself. Okay, you will know how much you know yourself. और अगर आप खुद को जानते हो तभी आप अपनी पर्सनालिटी को इम्प्रूव कर पाओगे. अगर आप खुद को ही नहीं जानते तो कैसे इम्प्रूव करोगे पर्सनालिटी को? My first question is, what kind of person do you want to be
when you will be 70 years old? Just think and get an answer in your mind. What kind of person would you want to be when you would be 70 years old? Next question. What kind of life do you want to live when you would be 70 years old? आप कैसी life जीना पसंद करोगे जब आप 70 years old हो जाओगे? Next question. What kind of relationships do you want to have with people around you when you will grow a little older? कैसे relationships आप चाहोगे अपने parents, अपने partner, अपने children, with your mentors, with your teachers, with the professionals that you work in the office? What kind of relationship would you want to have with people around you? Next, what kind of skills and knowledge do you want to develop? आप कैसी skills और knowledge को develop करना चाहते हो? कभी सोचा है? What kind of skills and knowledge do you want to develop? क्या आप life skills develop करना चाहते हो? Or you are only focusing on the technical skills जो आपकी job में काम आते हैं, right? So what kind of skills and knowledge आप develop करना चाहते हो? And the last, what activities would you be involved in when you will be 70 years old? किस type की activities में आप involve होगे जब आप 70 years old हो जाओगे? Do you have any idea? Or do you have any goal in mind? अगर इस activity से आपको कुछ भी idea मिला हो कि आपको अपने बारे में कुछ पता है या नहीं पता है, I leave it up to you. I leave it up to you. You are the best decider कि आपको अपनी पर्सनैलिटी को कितना इम्प्रूव करना है. अगर आप अपने फ्यूचर के बारे में थोड़े से भी क्लियर हैं कि आप कैसे सोसाइटी में रहना चाहते हैं, कैसे रिलेशनशिप्स डेवलप करना चाहते हैं, किस तरीके के आप इंसान बनना चाहते हैं, इफ यूर थोड़ी सी भी क्लैरिटी है, देन यू कैन डेफिनेटली वर्क ऑन योर पर्सनैलिटी. लेकिन अगर बिल्कुल क्लैरिटी नहीं है ना, एंड यू आर लिविंग इन रैट रेस, अगर आप रैट रेस में हो कि बस सुबह उठा और काम पे चले गए और बस कंपटीशन में लगे हुए हैं सब एक दूसरे से, देन फिर पर्सनैलिटी में इंप्रूवमेंट नहीं आता है. इफ यू आर ओनली लिविंग इन कंपटीशन, द बेस्ट इज लिव इन कंपटीशन विद योरसेल्फ. टुडे इज 21st of July 2023. By 31st of December 2023, अगर आप अपने में कुछ भी इंप्रूव कर पाओ, then you can actually say that you have been able to work on your personality. So stop comparing yourself to anyone else और सबसे jealous होना बंद हो जाओ. कोई क्या कर रहा है अपनी लाइफ में, अगर बहुत अच्छा कर रहा है आपसे, बहुत अच्छी बात है, इंस्पायर हो जाओ. बट अगर यू विल एक्सेप्ट योरसेल्फ, और अगर आप में कोई शॉर्ट कमिंग्स भी हैं, बस एक्सेप्ट कर लो कि ठीक है मेरे अंदर शॉर्ट कमिंग्स है, कोई बात नहीं, आई विल वर्क ऑन दैट. एंड व्हेन यू विल बिकम सेल्फ अवेयर, उस दिन आपकी पर्सनैलिटी में शाइन आएगा. और हमेशा पर्सनैलिटी में शाइन विद इन आता है. इट कम्स फ्रॉम विद इन, इट डज नॉट कम फ्रॉम आउटसाइड. इट डज नॉट कम फ्रॉम द वोकैबुलरी यू डू. It does not come from the kind of clothes you wear. It does not come from the kind of makeup or the accessories you wear. It does not come from the branded clothes. हाँ, ये सब चीजें बहुत अच्छी हैं. I also pay attention to these things because they enhance my personality. But मैं सिर्फ इन चीजों पे focus नहीं करती because I know they are very short-lived. So your awareness has to come from within. Okay? So now let's move on to the next slide. Now, in this slide, you will see that हमारी personality के क्या-क्या dimensions होते हैं. How many dimensions can you see here? 6 dimensions. There are 2 rows and 3 columns. First is हमारी communication skills. Second, हमारी emotional intelligence. Third, क्या हम लाइफ में गोल सेट करते हैं और क्या हम टाइम को मैनेज कर पाते हैं. फोर्थ, हमारा टीम वर्क कैसा है. अगर आप किसी टीम में भी नहीं काम कर रहे तो आप अपने घर में भी तो अपनी फैमिली के साथ टीम की तरह काम करते हैं. एंड आप कहीं ना कहीं, अगर आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में लीडर नहीं है, आप कहीं ना कहीं तो लीडरशिप रोल को यू विल डेफिनेटली इम्प्लीमेंट. चाहे किसी छोटे से ग्रुप में ही क्यों ना हो, चाहे विद इन अ ग्रुप ऑफ योर फ्रेंड्स ही क्यों ना हो. एवरीथिंग इज अबाउट टीम वर्क एंड लीडरशिप. नेक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन. क्या आपको कॉन्फ्लिक्ट को सुलझाना आता है या फिर आपको बातों को बढ़ाना आता है? बहुत डिफरेंस है. सम पीपल आर वेरी आर्ग्यूमेंटेटिव इन नेचर और वो चाहते हैं कि वो बस थोड़ा सा एंग्री होके बातों को बढ़ावा दें. बट इफ यू विल फोकस ऑन नॉट इंक्रीजिंग द प्रॉब्लम, बट इफ यू विल फोकस ऑन क्रिएटिंग अ सोल्यूशन, वो एक कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन बहुत अच्छी क्वालिटी है. एंड इफ यू वर्क ऑन दैट, योर पर्सनैलिटी विल इंप्रूव. एंड द लास्ट, mindfulness and stress management.
अगर आप अपना स्ट्रेस मैनेज कर पाते हो तो आप अपनी पर्सनालिटी को और उभार के बाहर निकालोगे. बट अगर आप छोटी छोटी चीजों से थोड़ा स्ट्रेस में आ जाते हो तो थोड़ा सा चैलेंज क्रिएट होगा पर्सनालिटी को इनहैंस करने में. बट आई एम नॉट सेइंग कि ये पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल हर चीज है, बट थोड़ा चैलेंज क्रिएट होगा. Okay, so I repeat again, these are the 6 fundamentals we are going to cover in this session today. Communication skills, emotional intelligence, goal setting and time management, teamwork and leadership, conflict resolution, and mindfulness and stress management. Mindfulness का मतलब किसी को पता है? Anybody knows about mindfulness? Okay, in simple terms, although mindfulness is a very vast term, but I'll tell you a very simple point of mindfulness. It is about living in the present moment, living in the now. अगर आप ये सेशन सुन रहे हो and right now it is 4:37 PM IST, तो आप बस सेशन पे फोकस कर रहे हो. You're focusing on the slide, you're focusing on my words, you're focusing on the time as 4:37. You're not caring about what happened at 4:30. You're not caring about what will happen at 6:30. You're not caring about कि घर में अभी क्या हो रहा होगा या what dinner will you make. Yes, you should be concerned about this. But अगर आप अपना focus थोड़ा सा present moment में और रखोगे, that means you are being a little more mindful. Okay, so these are the dimensions we are going to cover in today's session. Let's start with improving the communication skills. Now, we will cover 4 points in communication skills. अगर आपको अपनी communication skills को बढ़ाना है, then definitely you should work on your vocabulary. Okay, vocabulary, चाहे it is in the Hindi language or any regional language or English language, anything. First of all, communication skills does not mean that you are good in speaking English. Many people say, ma'am, I want to improve my communication skills, and by that they mean they want to improve their English speaking skills. Communication skills can be improved in any language. And आप जिस भी language में बात करो, वो आपकी vocabulary, अगर आपकी उसमें vocabulary अच्छी है तो बहुत अच्छी बात है. Okay? But जो बहुत important points हम miss कर जाते हैं communication skills में, वो क्या है कि हम सुनते नहीं हैं. We are not active listeners. If you want to be a good communicator, today go to your home and speak to your family member और उनसे कोई question पूछो. And थोड़ा सा बड़ा question पूछना जिससे कि उनका आंसर जो है 5-6 sentences में आए. And open your ears and actually listen कि वो कह क्या रहे हैं. Reality में सुनने के लिए सुनो. Listen to understand, listen to not react. Okay, so if you are a good listener, you are a good communicator. Next, if you want to improve your communication skills, look for opportunities where you can start speaking in public. Now, this is also a public forum. So if I'm saying that you ask question, I will highly recommend that you ask question, unmute yourself and speak. Because here you're utilizing the opportunity to practice your public speaking skills. Okay, you don't have to be perfect in it. I'm only saying कि बस practice करो. जहां मौका मिल गया वहां कुछ ना कुछ कोशिश करो कि आप ग्रुप पे कुछ बोल के आओ. Okay, next, practice non-verbal communication. अब verbal communication क्या होता है? The words that I'm using is the verbal communication. But non-verbal क्या है? The way I'm using my hands, the way I'm making eye contact with you all, the way I'm changing my voice, the way I'm changing my facial expressions, all of this comes in non-verbal communication. अगर मैं अपनी non-verbal communication पे काम नहीं करूंगी, then you all will sleep in this session and I will speak like this. Okay, let's go on to the next slide. We will work on our communication skills. Will you like this kind of session where I just speak like a robot? Will anybody like that? So I am deliberately focusing on my non-verbal communication because मुझे पता है कि अगर आप मेरे words पे ध्यान नहीं दोगे, at least you will pay attention to my hands, to my voice, to my facial expressions. This is called non-verbal communication. और जब आप इस पे काम करते हो, ये आपका verbal communication से ज़्यादा effective होता है. Okay, let me give you an example. Suppose I welcome Abhishek to this session and I say, hi Abhishek, welcome. Okay, ये एक तरीका हो गया. दूसरा हो गया, hi Abhishek, welcome to the session, nice to meet you. कौन सा ज्यादा impactful है non-verbal communication में? Anybody would like to tell the answer? Ma'am, I think that second one, which Second you have put the hand gesture. Yes, yes. Okay, so these are the 4 things that you can keep in Second mind. one, because of the facial expression.
Okay, thank you, sir, for sharing that. So these are the 4 elements of your improving your communication skills. Communication skills और बहुत सारा एक बहुत ही wide topic है. Just because we are covering personality development here, I've taken a very small thing here. Okay, so now there's so much to cover. So let's do one thing. We will do this case study quickly. This is related to communication skills. Suppose you're working in an office and there are 4 different departments working together on a project, okay? And there are 4 different departments and वो लोग आपस में अच्छा communicate नहीं करते. There is bad communication and it becomes an issue. इसकी वजह से project complete नहीं हो पाता. So let's see what could be the cases of bad communication. First is lack of clarity. Suppose कोई project manager है and they do not give clear instructions to their team कि कैसे करना है काम, कब तक करना है और काम में क्या चीज बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर वो क्लियरली नहीं बताएंगे अपने टीम मेंबर्स को और घुमा फिरा के चीजों को बताएंगे और सबको कंफ्यूज कर देंगे, तो मुझे कुछ और समझ में आएगा, अभिषेक को कुछ और समझ में आएगा एंड नवनीत विल अंडरस्टैंड फ्रॉम हर ओन पर्सपेक्टिव. अब हम सब अपना काम कर रहे हैं. आफ्टर 1 month we meet and then the project manager says कि ये तो ऐसे नहीं करना था, आपने ये क्यों नहीं करा, आपने ये क्यों करा है. देन आई विल से कि सर आपने बताया नहीं था. वो बोलेंगे या बट मैंने ये तो बोला था ना आपसे. तो द थिंग इज कि उन्होंने जो भी बोला था उन्होंने क्लियरली नहीं बोला, और क्योंकि क्लियरली नहीं बोला तो उस सेंटेंस का मीनिंग मैंने कुछ और समझा, अभिषेक ने कुछ और मीनिंग समझा एंड नवनीत ने कुछ और, सबने अपने अपने माइंड में इंटरप्रेट कर लिया. और हमसे क्या गलती हुई, I also did not clarify that with the project manager before starting my work. Abhishek also did not clarify and neither Navneet. तो सबकी गलती हो गई यहाँ पे, किसी ने भी क्लियर कम्युनिकेशन नहीं करा, राइट? सो ये बहुत कॉमन एग्जाम्पल है, आपको टीम्स में ये मिल जाएगा. when people do not tell the other team members very clearly what is the task to be done, how it is to be done and what are the important things to be taken in mind, then it results in lack of clarity. और वहां पे हमारा कम्युनिकेशन स्किल्स थोड़ा सा इनफेक्टिव हो जाता है और उसकी वजह से ये क्या होता है, इट इज अ क्लियर रिफ्लेक्शन ऑफ आवर पर्सनालिटी. ओके, नेक्स्ट, पुअर लिसनिंग स्किल्स. नाउ सपोज आई एम द प्रोजेक्ट मैनेजर and Abhishek is working in my team. Abhishek wants to convey some feedback, but I don't listen to Abhishek. मैं कहती हूँ नहीं अभिषेक रहने दो, अभी काम पे फोकस करो, फीडबैक बाद में देना. एंड फिर क्या होता है, काम अच्छे से नहीं हो पाता. बिकॉज आई हैव पुअर लिसनिंग स्किल्स, इट विल क्रिएट मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन मी एंड अभिषेक. अभिषेक जो बात कहना चाह रहा है इतनी इंपॉर्टेंट, मैं वो सुनने को ही रेडी नहीं हूँ. दैट मीन्स आई एम नॉट अ गुड कम्युनिकेटर. ओके, सो आपकी कम्युनिकेशन आपकी लिसनिंग स्किल्स पे बहुत ज्यादा डिपेंड करती है. नेक्स्ट, इनइफेक्टिव फीडबैक. नाउ टुडे आई विल रिक्वेस्ट एवरीवन, as I am seeing in the chat box, I'm sure you'll be giving the feedback after this session. आप जब भी फीडबैक आज दो, प्लीज शेयर वेरी स्पेसिफिक फीडबैक. अगर आपको सेशन में कुछ अच्छा लगा तो आप बताओ कि आपको क्या अच्छा लगा, और अगर कुछ नहीं अच्छा लगा तो आप ये भी बताओ कि क्या नहीं अच्छा लगा. अगर आप ये बोलोगे ना फीडबैक फॉर्म में दैट द सेशन वाज गुड और द सेशन वाज ओके और द सेशन वाज नॉट दैट गुड, तो गुड, ओके एंड नॉट ओके के तो बहुत सारे मीनिंग है. मुझे कैसे पता चलेगा कि हाउ इट वाज गुड और हाउ इट वाज ओके or how it was not good? So please, whenever you're giving feedback to someone, give a very specific feedback कि जिससे आप जिसको feedback दे रहे हो उनको भी उनको help हो पता करने में कि उनकी strength क्या है और उनकी weakness क्या है और वो क्या improve कर सकते हैं, right? So अगर हम अच्छा feedback, मतलब एक effective feedback देते हैं तो हम good communicator बन जाते हैं. And let's move on to the next slide. Yes. Now the second part of our personality, हमने communication skills पे तो काम कर लिया, अब हम काम करेंगे अपनी emotional intelligence पे. Anybody knows what is emotional intelligence? Or if you have heard this word, say yes in the chat box. अगर आपने सिर्फ ये word सुना है, just write Y in the chat box. Okay, nobody has listened to this word. Okay, thank you. One person has. Okay, 2 people. Okay, so emotional intelligence क्या होता है? अगर मैं अपने इमोशंस को रेगुलेट कर पाऊं, सबसे पहले अगर मैं अपने इमोशंस को समझ पाऊं, आई एम एबल टू रेगुलेट माय इमोशंस एंड आई एम एबल टू अंडरस्टैंड अदर पीपल्स इमोशन, देन आई एम एन इमोशनली इंटेलिजेंट पर्सन. आई रिपीट अगेन,
if I'm able to understand my own emotions in different circumstances, I am able to regulate my emotions. और मैं अपने emotions को अपने mind पे हावी ना होने दूं, मैं अपने इमोशंस को कंट्रोल में थोड़ा सा रखने की कोशिश करूं और ठंडे दिमाग से सोच के फिर एक डिसीजन लूं। मैं ना बहुत लॉजिकली सोचूं, ना मैं एकदम इमोशनली सोचूं, मैं अपने डिसीजंस में लॉजिक भी लूं और इमोशंस को भी साथ रख के कोई डिसीजन लूं। और साथ ही साथ अगर मैं सामने वाले के भी इमोशंस को समझूं, दैट मीन्स आई एम एन इमोशनली इंटेलिजेंट पर्सन। कभी कभी हम सामने वाले के इमोशंस को नहीं समझ पाते। कोई हमसे कुछ बुरा कह जाता है तो हम कहते हैं ये तो बहुत बुरे हैं, ये हमेशा हमें ऐसे बोल के जाते हैं, बट हमें नहीं पता कि वो हमें ऐसा क्यों बोल रहे हैं। आप सोच के देखिए, अगर वो आपको कुछ ऐसा बोल रहे हैं उसके पीछे भी कोई कारण होगा, कुछ कारण होगा। So if you start to understand why people say and behave the way they say and behave, if you understand the why behind it, so you are going closer to being emotionally intelligent. Okay, so now we will focus on developing our emotional intelligence. बहुत बड़ा topic है, but I will cover very few points today because we have to cover a lot of things. Okay, so I am okay. So first is you practice self reflection. आप आज एक क्या काम करना, make a list of 5 important events in your life from childhood till now, 5 important events जो आपकी life में हुए हो, and then you create 5 columns and you self reflect कि उस incident में वो जो एक important event हुआ था, how did I behave, या फिर मैंने क्या सोचा था, all of that. If you self reflect your behavior in all these situations, तो सबसे पहला काम तो आपका यहीं पे हो जाएगा कि आप एक emotional intelligence के पास जा रहे हैं. You are able to reflect on yourself. तो हमें सामने वाले पे ज्यादा फोकस नहीं करना है कि लोगों ने उस टाइम क्या किया, मेरे मॉम डैड ने मुझे कितना सपोर्ट किया, या मेरे फ्रेंड्स ने कितना किया, या मेरे टीचर्स ने कितना किया. नहीं, you have to first focus on आपने अपने आप को कितना सपोर्ट किया. सेल्फ रिफ्लेक्शन कीजिए. सेकेंड, एम्पथी डेवलप कीजिए. नाउ आई गिव अ वेरी small example here. Suppose I joined the session at 4, right? Navneet told me that ma'am we will start at 4:10. और अगर मैं ये कह देती कि नवनीत ये कौन सी बात हुई, why we will start at 4:10? You told me that we should start at 4 only. If you had told me we will start at 4:10, I would have logged in at 4:10 only. So my 10 minutes are getting wasted. And then I start getting angry. And I will say, no, I will start right now only. Let other people miss the session. That means I'm not having empathy. मैं समझ ही नहीं पा रही कि सामने वाले जो मुझे बोल रहे हैं उसके पीछे रीजन क्या है. तो I know why you were waiting for 10 minutes because you wanted everyone to come and so that maximum people take the benefit of the session. और usually इंडिया में होता है, हम जो भी टाइम देते हैं लोग उससे लेट ही आते हैं. So it's a very good thing कि 10 minutes लेट ही स्टार्ट करना चाहिए. Right? But if I am not able to understand ki why you are saying or why you are doing something, then I am not empathetic. Empathy का मतलब है कि मैं अपने shoes में ना रह के मैं नवनीत या अभिषेक के नजरिए से चीजों को देखूं, क्योंकि वो तो इस सेशन को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो वो तो यही चाहेंगे कि मैक्सिमम लोगों को इसका फायदा मिले, राइट? तो मैं उनके नजरिए से सोचूंगी तो मैं पेशेंस रहूंगी और मैं काम रहूंगी. लेकिन अगर मैं सिर्फ अपने बारे में सोचूंगी तो मुझे गुस्सा आएगा और फिर मैं कहूंगी कि मेरे टाइम की किसी ने रिस्पेक्ट नहीं करी, एंड देन मैं बोलूंगी नहीं मैं तो अभी स्टार्ट करूंगी, जिसका मिस हो जाता है हो जाए, राइट? तो हमें एम्पैथी डेवलप करनी है. अगर आपका थोड़ा सा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, या फिर ऑफिस में होता है, बहुत नॉर्मल है, होएगा भी. कभी भी 2 व्यूज मैच नहीं करेंगे हमेशा, बट आपको एम्पैथी डेवलप करनी है. आपको रिएक्ट नहीं करना है एकदम से, आपको पॉज लेना है और आपको सोचना है कि अच्छा सामने वाले का ओपिनियन मुझसे डिफरेंट है, तो वो क्यों हो सकता है डिफरेंट, उसके पीछे भी तो कोई रीजन होगा ना. वो जितना सोच पा रहे हैं वो बेस्ट सोच पा रहे हैं और मैं अपनी तरीके से बेस्ट सोच पा रही हूँ. तो यू हैव टू स्टार्ट टू डेवलप एम्पैथी. लोगों के नजरिए को देखना स्टार्ट करो. एंड द लास्ट इज प्रैक्टिस इमोशनल रेगुलेशन. प्रैक्टिस इमोशनल रेगुलेशन. दैट मीन्स अगर आपको कभी एंगर इश्यूज होते हैं, या फियर होता है, या एंजाइटी होती है, या स्ट्रेस होता है, या थोड़ा सा लो कॉन्फिडेंस हो जाता है, या फ्रस्ट्रेशन होता है, ऑल ऑफ दीज थिंग्स इफ यू आइडेंटिफाई कि आपको कब कब ये चीजें होती हैं, कब कौन से ऐसे ट्रिगर्स हैं जिसकी वजह से आपको आपके इमोशंस जो है पॉजिटिव से नेगेटिव में चले जाते हैं. तो जब आपको ट्रिगर्स पता चल जाएंगे और आप कुछ ऐसी स्ट्रैटेजीज अपनाओगे अपनी लाइफ में, तो आप अपने इमोशंस को रेगुलेट करना स्टार्ट कर दोगे.
तो इमोशंस आपकी लाइफ को नहीं चलाएंगे, बल्कि आप इमोशंस को कहोगे कि भाई अभी रुक जाओ, अभी इंपॉर्टेंट काम चल रहा है, अभी मुझे ज्यादा डिस्टर्ब करो। लेकिन अगर आप इमोशंस को रेगुलेट करना नहीं सीखोगे तो इमोशंस आपको रेगुलेट करेंगे, और फिर आप लाइफ में अच्छे डिसीजंस नहीं ले पाओगे, अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाओगे, राइट? तो ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं टू डेवलप इमोशनल इंटेलिजेंस। सबसे पहले खुद से कनेक्ट करना सीखो, सेल्फ रिफ्लेक्ट करो कि आज पूरे दिन में क्या हुआ, क्या अच्छा हुआ, क्या बुरा हुआ, मैं और कैसे अच्छा परफॉर्म कर सकता था। ओके, सेल्फ रिफ्लेक्ट। फिर मैंने एम्पैथी प्रैक्टिस की कि नहीं, क्या मैं लोगों के साथ मैंने रूड बिहेवियर किया, क्या मैं रूड था, क्या मैं सेल्फ सेंटर्ड थी, या फिर मैंने एम्पैथी दिखाई लोगों के साथ, मैंने दूसरों के नजरिए को समझने की कोशिश की। दैट इज कॉल्ड एम्पैथी। एंड द लास्ट इज कि जब मुझे गुस्सा आता है, मुझे फ्रस्ट्रेशन होता है, हाँ मुझे कंट्रोल नहीं होता, बट कोई बात नहीं, मैं प्रैक्टिस करूंगी, मैं कुछ काम अपने आप को रखने की कोशिश करूंगी और मैं एकदम से रिएक्ट नहीं करूंगी। दैट इज कॉल्ड इमोशनल रेगुलेशन। जब आप ये चीजें प्रैक्टिस करने लग जाएंगे, स्लोली एंड स्टेडीली आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस बढ़ेगी, और जब आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस बढ़ेगी, पीपल विल स्टार्ट लाइकिंग यू एंड आपकी पर्सनैलिटी डेवलप होगी। ओके, सो हमने फर्स्ट बात किया कम्युनिकेशन स्किल्स पे, सेकंड वी टॉक्ड अबाउट developing emotional intelligence. So there are various things inside emotional intelligence which we have discussed. Now we come to goal setting. Okay, गोल्स को आपको सेट करना है। अगर आप गोल ओरिएंटेड हो अपनी लाइफ में, दैट मीन्स आपकी पर्सनालिटी में डेफिनेटली इंप्रूवमेंट आएगा, क्योंकि आप गोल सेट करते हो। तो जब भी आप गोल सेट करें तो आप स्मार्ट गोल सेट करें, SMART। जिन लोगों के पास गोल्स नहीं होते ना, वो हेडलेस चिकन की तरह घूमते हैं। मैं भी पहले गोल्स नहीं बनाती थी। आई स्टार्टेड मेकिंग माई गोल्स फ्रॉम लास्ट ईयर। उसके पहले मैं गोल्स नहीं बनाती, तो मुझे पता ही नहीं होता था, कभी ये कर लिया, कभी कुछ और कर लिया, फिर कहा ये भी नहीं हो रहा, वो भी नहीं हो रहा, और सारा कंफ्यूजन हो जाता था माइंड में। सो गोल्स बनाने बहुत जरूरी है। स्मार्ट गोल्स इज वेरी नेसेसरी इफ यू वांट टू इम्प्रूव योर पर्सनैलिटी। स्मार्ट का मतलब है, S मीन्स स्पेसिफिक, M मीन्स मेजरेबल, A means achievable, R means realistic, and T means time bound. Specific, measurable, achievable, realistic, time bound. Let's take example of specific. Please listen very carefully. Anybody who wants to share anything? Like any example of specific goal? Anyone? Okay. Suppose if I say I want to improve my health. If I say I want to improve my health, this is not a specific goal. Improve मतलब ये specific तो है, but बहुत ज्यादा specific नहीं है, because health में तो बहुत सारी चीजें आती हैं, physical भी आती है, emotional भी, mental health भी आती है। मुझे कौन सी health improve करनी है, और improve का मतलब क्या है, मैं खुद से ही क्लियर नहीं हूँ। मैं बस ये कह रही हूँ मुझे अपनी हेल्थ इंप्रूव करनी है। If I say I want to reduce my weight by 10 kgs and I want to start to feel happier in my life, that means I am creating specific goal. Okay, yes, thank you for mentioning it in the chat box. Goal should be very clear with certain purpose. Purpose भी होना चाहिए गोल के पीछे, क्योंकि पर्पस नहीं होगा ना क्यों कर रहे हैं, तो सारे गोल थोड़े दिन के बाद सबकी मोटिवेशन चली जाती है। Purpose should be there. So your goal should be specific. अगर आप कह रहे हो कि I want to become a good reader, I want to become a good reader. What do you mean by good reader? Maybe good reader मेरे लिए होगा कि I want to read 100 books in an year. But हो सकता है for Abhishek it is reading 200 books in an year, and maybe for Vandana it is just reading 1 book in an year, but with full focus. So सबके लिए specific का meaning अलग है, तो you define what is specific for you. Next is measurable. If I want to lose weight, how much weight I want to lose? I should not say I want to lose weight. I want to become thin. Arey, how much weight I want to lose? 10 kgs, 5 kgs, or only 2 kgs, right? It should be measurable. Next, achievable होना चाहिए आपका goal. अगर suppose right now we are in July 2023 and I want to lose 10 kgs of weight, I know that by December it is absolutely possible. But if I say that in the next 2 weeks, I have to go to my friend's wedding and I want to reduce 10 kgs of weight. In the next 2 weeks, I'll follow some crash diet, which is not good for health. I know maybe it's not achievable, but if it is achievable through not very good methods. So achievable ऐसा goal set करो जो आप achieve कर सको कितने specific period में. Okay. Realistic goal set करो. If suppose today you are earning 20 lakhs per annum and you can't say that, okay, from the next year I want to earn 1 crore. I mean, some people can definitely achieve that. But what I'm saying is, if you want to improve your income goals, then you can say, okay, I want to start earning
22 or 23 or 25 lakhs per annum by next year. So I am searching for a new job. Right? So it should be realistic. थोड़ा realistic लगना चाहिए ना. या फिर it can also be from 20 lakhs. You will say I'll shift on to another company. They will give me a very good hike and I will start earning 50 lakhs. So this is still realistic. तो ऐसे goal set करो जो realistic हो. If your friend is earning 5 crores और आप बोलो अभी तो मेरा 20 lakhs per annum का package and I want to earn 5 crores. I want to be like that. So वो एक साल में तो I don't think so. It's very realistic. Now, if you know any methodology that works for you, well and good. मुझे अभी तक नहीं पता है. So ठीक है, तो हम realistic way में काम करेंगे. पहले 1 पे जाएंगे, फिर 1.5 crores, फिर 2 crores, and then we will see how we can scale that up. And next, time bound. आपका goal time bound होना चाहिए. आपको पता होना चाहिए कि अगर आपको अपना weight reduce करना है तो कब तक करना है. 6 months में करना है या next 6 weeks में करना है या 10 days में करना है. Time होना चाहिए, क्योंकि अगर time नहीं होगा then you will just keep on delaying working on your goals. Time जरूर set किया कीजिए. ठीक है, तो जब आप अपनी लाइफ में गोल सेट करते हैं तो आपको एक डायरेक्शन मिलता है, आपको कॉन्फिडेंस फील होता है कि मैं किसी पर्पस के लिए काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ. एंड देन आपकी पर्सनैलिटी में इंप्रूवमेंट आता ही आता है. ठीक है, क्योंकि आपके जब गोल्स होंगे देन यू विल स्टॉप टू फोकस ऑन अदर पीपल. तब आपका ध्यान दूसरे लोगों से जाके खुद पे जाएगा. राइट? एंड then you will definitely be able to improve your personality. Okay, so these are a few examples that I gave here. Next is start managing your time. अगर आप अपने टाइम को मैनेज करते हो, आपको बहुत सारी टेक्निक्स मिलेंगी इंटरनेट पे भी, which will talk about how to manage your time to improve your personality. But मैं आपको सिर्फ एक चीज बोलूंगी, टाइम मैनेजमेंट, वो मैंने इस स्लाइड में नहीं लिखा है. टाइम मैनेजमेंट इज एनर्जी मैनेजमेंट. अगर आप अपनी एनर्जी को मैनेज कर लो, अगर आप अपने इमोशंस को मैनेज कर लो, तो आप अपनी एनर्जी को मैनेज कर पाओगे. एंड व्हेन यू विल मैनेज योर एनर्जी, आपका टाइम अपने आप मैनेज हो जाएगा. तो हम टाइम को नहीं मैनेज करते, हम सेल्फ को मैनेज करते हैं. कैसे? अपनी एनर्जी, अपने इमोशंस को मैनेज करके. सो नेक्स्ट टाइम यू आर सेइंग दैट oh my god, so many things are there, I'm getting overwhelmed, I'm not able to prioritize this, I'm not able to manage my time, always look within. Internet पे you will find lot of techniques, Pomodoro technique, eat the frog, बहुत सारी चीजें हैं टाइम मैनेज करने के लिए, and they work for some people, right? But with some people they still are not able to manage their time by following this technique, following the various techniques available on internet. Why? Because the main issue lies with your emotions and your energy. जिस दिन आप अपनी एनर्जी को मैनेज कर लोगे, उस दिन आप अपने टाइम को मैनेज कर लोगे. और आपको एनर्जी को क्यों मैनेज करना है? बिकॉज आपकी बॉडी 5 एलिमेंट से बनी है, और इन दिस यूनिवर्स एवरीथिंग इज एनर्जी. Even your body is energy. आपकी बॉडी में, आपकी बॉडी एनर्जी ही तो है. You know, we have 5 elements. It is all energy. तो आपको अपनी एनर्जी को मैनेज करना है. एनर्जी को मैनेज करने के लिए अपने इमोशंस को मैनेज करना है. जिस दिन आप अपने इमोशंस को मैनेज कर लो, कि कभी आपको गुस्सा आया, कभी फ्रस्ट्रेशन हुआ, कभी स्ट्रेस हुआ, कभी काम हुए, उन चीजों के साथ आपको डील करना आ गया जल्दी जल्दी, और आप एक जगह फंसे नहीं. कि अगर आपको स्ट्रेस हुआ तो ये नहीं कि आप 2 घंटे फिर उसी में हो और आपने काम नहीं कर पा रहे आगे. हाँ, आपको स्ट्रेस होगा, बट आप उसको कैसे मैनेज कर रहे हो, और कैसे आपके पास कोई और चीज आ रही है, आप उसको फिर फोकस उस पर कर पा रहे हो. तो वो फोकस मेंटेन कैसे होता है? अपने इमोशंस को मैनेज कर. ओके, सो आई विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट थिंग. इफ यू वांट टू इम्प्रूव योर पर्सनैलिटी, also work on your leadership skills. So leadership skills I will talk from a professional perspective. अगर आप कोई मैनेजर है या आप किसी टीम को लीड कर रहे हैं, then आपके ये 3 चीजें आपको ध्यान में रखनी है. ऑल्दो लीडरशिप पे भी बहुत बड़ा, कम से कम 4-5 घंटे की वर्कशॉप हो सकती है, बट आई विल कवर वेरी मेन पॉइंट्स हियर. ठीक है, सपोज आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं इन योर ऑफिस, एंड योर टीम लीड मेक्स यू द लीडर ऑफ दैट प्रोजेक्ट, एंड आपके अंडर 10 people हैं. So you have 10 people in your team. सबसे पहले अगर आपको लीडर की तरह चूज किया गया है, you make a vision. आपके पास एक विजन होना चाहिए कि हमें इस प्रोजेक्ट से अचीव क्या करना है. अगर विजन आपके पास नहीं होगा तो आप अपनी टीम को कैसे बताएंगे? तो आपके पास विजन होना चाहिए सबसे पहले. दूसरा है एम्पथी. हमने इमोशनल इंटेलिजेंस में अभी एम्पथी को पढ़ा है, राइट? कि हमें आई हैव टू अंडरस्टैंड अदर पीपल्स पर्सपेक्टिव. तो अगर आप एम्पथी मेंटेन कर पा रहे हैं अपने कॉलीग्स के साथ, अपने टीम मेंबर्स के साथ, तो आप एक अच्छे लीडर साबित होंगे. अगर आप एम्पथाइज नहीं कर पा रहे, अगर कोई बहुत परेशानी में है, सपोज आई एम द लीडर एंड अभिषेक इज इन माय टीम,
and other people are also there, and Abhishek is not feeling well and he's not able to focus on the work. And then I am seeing that Abhishek is not doing his work properly for the last 1 hour. अब अगर मेरे पास empathy नहीं है, I'm taking this example. If I do not have the empathy, I will go to Abhishek and I will start shouting at Abhishek. I will say, Abhishek, you're very irresponsible. You're not doing the work. You're taking everything for granted. You're taking the salary for granted. That means I don't have empathy, because I never gave any opportunity to Abhishek to even clarify his behavior. तो अगर मुझे कुछ भी discrepancy दिखती है और मुझे empathy दिखानी, मुझे सबसे पहले अभिषेक के पास जाना है और मुझे बोलना है कि अभिषेक, I am noticing कि पिछले 1 घंटे से शायद आपकी तरफ से कोई मेल नहीं आ रहा है, या फिर आप अपने काम में ज्यादा ध्यान लगाते हुए मुझे नहीं दिख रहे, तो कोई चैलेंज है क्या? अगर कोई चैलेंज है आप बताओ, आई विल हेल्प यू टू रिजॉल्व इट. तो लीडर को ये करना होता है, रादर देन सामने वाले को डांटने से पहले सबसे पहले उसे समझो और ये डिसाइड करो कि वो ऐसा क्यों कर रहा है सामने वाला, एंड ट्राई करो कि आप उनको सोल्यूशन प्रोवाइड करो. डोंट ट्राई टू डिस्करेज देम, और उन्हें डांटो नहीं, बट ट्राई करो कि उनको समझो एंड मेक देम फील अ पार्ट ऑफ योर टीम एंड बिकम अ पार्ट ऑफ देयर सोल्यूशन. उनको ही बोलो कि ओके टेल मी, आपको कोई सोल्यूशन की जरूरत है, कुछ चेंज करना है, मैं आपकी हेल्प करती हूँ. सो दैट इज कॉल्ड एम्पैथी. एंड द लास्ट इज अकाउंटेबिलिटी. आपको अकाउंटेबल रहना है अपनी टीम के लिए. अगर अभिषेक को प्रोजेक्ट कल सबमिट करना है और नवनीत को परसों करना है, I should be accountable to them and they should be accountable to me. ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैंने उन्हें फर्स्ट डे बताया और फिर मैं तो चली गई कहीं और, राइट? I am there in the office but I am doing some other work and मुझे लग रहा है अब मुझे क्या करना, अब तो अभिषेक और नवनीत अपने आप संभाल लेंगे, and I am least interested in even discussing anything with them. And then last day I go to them and I say, where is the project? And they say कि मैम आप तो अवेलेबल ही नहीं थे, हमें कुछ डाउट्स थे, हमने आपको मेल भी सेंड करा, हमने आपको मैसेज भी करा, बट मैम. एंड देन आई विल से, अच्छा यू ऑल आर ब्लेमिंग मी, मैंने तो तुम्हें काम दिया था, यू आर नॉट डूइंग दिस. सो द थिंग इज आई डिड नॉट टेक अकाउंटेबिलिटी फॉर बीइंग देयर लीडर. और मैंने उनसे सिर्फ लास्ट डे में आके पूछा कि आपका वर्क हुआ कि नहीं, लेकिन बीच में मैंने कुछ नहीं पूछा. क्या आपका वर्क हो रहा है, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही, क्या मैं आपकी कोई हेल्प कर दूं, आपको किसी और रिसोर्स की जरूरत है? I did not ask all these things. That means I did not reflect a good leadership skills. That means I did not reflect good personality. तो आपकी leadership skills आपकी personality को define करती है. Okay? I will not go much deeper into it, but I hope that with the help of the examples, you understood कि what is a true leader. Okay? So any questions still here before we go on to the last section for the day? Any questions still here? Okay. Let's come here. Conflict resolution. You can see in the screen, both of them are screaming at each other and pointing fingers. और ये आपके ऑफिस एनवायरनमेंट में ऐसा हो सकता है कि कोई आप में कमियां निकालने की कोशिश करे. Somebody will try to say कि आपने ये काम नहीं किया, आपने टाइम पे नहीं किया, मेरी कोई गलती नहीं है. And somebody can do this. You have to be very mindful. If you will copy their behavior, then what is the difference between you and them? Remain calm and professional. Take responsibility and show empathy. अगर आपको लगता है कि हाँ आपकी गलती है, आपने कोई काम सही टाइम पे नहीं करा, but कोई आप पे चिल्ला रहा है and you're not liking it, tell them that I admit it was my mistake. But आप उन्हें बोलिए कि sir, I would like you not to speak like this. Let's handle this in a more calm manner. आप उन्हें कह सकते हैं. So अगर आप calm and professional रहेंगे, you can convey to them also to remain calm and little professional while dealing with this. So take responsibility. अगर आपकी गलती नहीं है, take responsibility. अगर आपको लगता है आपकी गलती है, take responsibility. Let everybody know. You can apologize for that, but show empathy. Okay? And focus on finding solution. Very important point. Don't focus on creating more and more and more problems. Focus on finding solution. Don't focus on exaggerating the arguments. Focus on finding solution. Very important. This is a great part of your personality. And next, develop mindfulness. We talked about developing mindfulness and managing your stress to take care of your personality. Yeah, we are quickly ending the session in the next 5 minutes. So, yeah. So, अगर आपको अपनी personality पे काम करना है, then focus on being mindful and managing stress. Now, there are various options for it. All of this. I will not focus on the last 2 options because I think it will be too overwhelming for you today.
बट आप फर्स्ट ऑप्शन पे फोकस कीजिए, प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड. लेट्स डू अ क्विक एक्टिविटी राइट नाउ. टेक योर लेफ्ट हैंड, those who can switch on the camera and they can show the left hand, well and good. Otherwise I would want you to just take your left hand. You have 4 fingers and 1 thumb. आपको क्या करना है, 365 days in a year you have to focus on creating the habit of saying gratitude to the universe. और सिर्फ इसलिए नहीं कहना है that I am saying कि आप gratitude बोलिए, दिल से बोलना है. तो अगर आप gratitude practice नहीं करते हैं और अगर आप आज से ये इंटेंशन सेट करेंगे कि आई विल स्टार्ट डूइंग द ग्रैटिट्यूड बिकॉज मैम टोल्ड कि जब हम ग्रैटिट्यूड मोड में जाते हैं तो हम अच्छा फील करते हैं, राइट? जब हम अच्छा फील करते हैं तो हमारी पर्सनैलिटी इनहैंस होती है. हमें इसलिए ग्रैटिट्यूड मोड में जाना है. बट हो सकता है आप आज से ग्रैटिट्यूड स्टार्ट करें तो आपको लगे ये तो बहुत फेक है, ये कैसा ग्रैटिट्यूड है, मुझे तो ग्रैटिट्यूड फील नहीं हो रहा. Then you will do it tomorrow, day after tomorrow, for 10 days you can keep doing, and you will say I'm not understanding, I'm not creating any feeling inside me while doing this gratitude. But the true gratitude will come when you start to actually feel it from within, and तब आपको लगेगा कि आपके पास तो बहुत सारी चीजें हैं, पर अभी हमारा दिमाग कहाँ जाता है, जो हमारे पास नहीं है, या फिर हमारे फ्रेंड ने ये बोल दिया, या फिर ऑफिस में इसने ये कर दिया, या फिर मेरे पास ये वाली जॉब नहीं है, ये वाली है, ये तो मुझे पसंद ही नहीं है. हमारा फोकस जो नहीं है उस पे जाता है. लेकिन अगर आप सच में ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करेंगे ना, गिव योरसेल्फ 10 days, उसके बाद आपके अंदर वो इमोशंस डेवलप होने स्टार्ट होंगे, फिर आपका ग्रैटिट्यूड एकदम फ्री फ्लोइंग मोड में चला जाएगा. सो व्हाट आई डू इज, okay, so Manasa has shared that true gratitude sometimes make us build good connections and positive vibes. Absolutely. Like I'm telling you, पहले जब मेरे पास कोई रिक्वेस्ट आती थी कि मैम वर्कशॉप लीजिए, तो मैं बहुत जैसे पैनिक कभी कभी हो जाते हैं, यू नो, वर्कशॉप के लिए प्रिपेयर करना है, अच्छा पता नहीं कैसा होगा वर्कशॉप में, कोई रिस्पॉन्ड करेगा कि नहीं, कोई मेरी बात सुनेगा कि नहीं. इफ आई फोकस ऑन ऑल दीज थिंग्स तो मैं कभी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मैं नेगेटिव पे फोकस कर रही हूँ. बट द मोमेंट that the day Divya messaged me that ma'am we are organizing this and we are expecting a positive response from your end, मुझे वो लाइन पढ़ के बहुत अच्छा लगा. And that day I said, Divya, thank you for your message, just allow me some time, I'll come back to you, because I wanted to check my schedule. I never wanted to say no, I wanted to check my schedule, and I took some time to say yes. I was in a state of gratitude that people have reached out to me. I have not reached out to anyone, but people have reached out to me, and I have not got an opportunity to speak to more people and spread the knowledge. So when I am operating from the space of gratitude, आप देख रहे होंगे कि like I can speak endlessly, I can speak till 9 p.m. today. तो मैं, because I'm very passionate about my topic, क्योंकि मैं gratitude के मोड से ऑपरेट करके यहाँ आई, and I even called some of my friends in this सेशन टुडे, राइट? लेकिन अगर मैं ये सोच के जाऊं कि अरे कब खत्म होगा, कब 1 घंटा होगा, काश मैं अच्छा सा परफॉर्म कर लूं, काश सबको समझ में आ जाए, तो आई डोंट नो वेदर आई विल परफॉर्म माय बेस्ट और नॉट. तो जिस दिन आप ग्रैटिट्यूड के मोड में चले जाओगे तो आपको अपॉर्चुनिटीज दिखाई देनी स्टार्ट कर देंगी और ज्यादा, और फिर आप बहुत अच्छा परफॉर्म करना भी स्टार्ट कर दोगे, आपकी पर्सनैलिटी में इंप्रूव आएगा. ओके, so I think there's a lot of gyan happening right now. So let's quickly do this activity. Just take your left hand and count 5 gratitudes right now. Okay, so if you want, you can just look at the demo that I do. I'm grateful for conducting this session and thankful to SEMS Foundation, Abhishek, Divya, and Navneet, and other people who are in this session. I'm grateful that I have water to drink, right? 2 gratitude. Okay, now Abhishek, what are you grateful for? You tell me. Ma'am, I think that I can say that I am gratitude to hosting this event. Grateful for hosting this event. You got the opportunity to host the event. Very good. Anyone else? One gratitude I would like to hear from 2 more people. Please, we are just ending the session. I would like to hear from someone. What are you grateful for? Grateful to listen to you. Grateful to listen to me. Okay. इसमें भी थोड़ा सा आप और स्पेसिफिक जाओ. Grateful to listen to me से उससे आपको क्या फायदा हुआ? Focus on that. और जब भी आप अपना gratitude लिखो, you write कि आपको उससे मिला क्या? Learnings. Learnings. Okay. Okay. And okay, learning new things well, being in the session today. Okay. Thank you so much for sharing that. So you can do this activity. कितनी देर लगेगी? लेफ्ट हैंड लेके ग्रैटिट्यूड जल्दी जल्दी काउंट करना है on the 5 fingers. This will hardly take 10 seconds to do. So do this maximum number of times in your day. जब भी आपको लगे कि मेरे को बहुत काम है या बहुत मुश्किल है लाइफ,
और इतनी सारी चीजें हैं, ये सब बहुत पता नहीं कैसे होगा. If you're going through all of that emotion, just leave everything aside, take your left hand, count your gratitude, and then do your task. And you can do the gratitude 5 times a day, 10 times a day. कितनी देर लग रही है? 10 seconds लगते हैं, 10 to 15 seconds, right? So this will, आपकी इससे क्या होगा? आपकी subconscious mind की rewiring होगी, और जैसे ही वो rewiring start होगी, आपकी habit बन जाएगी. अब कहीं पे भी, अगर आप स्टेशन पे कहीं हो, एयरपोर्ट पे कहीं वेट कर रहे हो, या किसी शॉप में आप कहीं वेट कर रहे हो, या किसी क्यू में आप वेट कर रहे हो, ग्रैटिट्यूड काउंट करो. अपने ग्रैटिट्यूड जिस दिन काउंट कर लोगे ना, सारी फ्रस्ट्रेशन चली जाएगी. बट ये प्रोसेस है, एकदम मैजिकल नहीं होता, बट इट्स अ प्रोसेस, तो थोड़ा सा टाइम लगता है, राइट? And so I will just leave this thing because I think we are coming at the end of the session. The last thing that I want you to focus on to maintain your personality is practice self-care. Okay, yes. This is the last thing that I want you to take away from today. Savers. By Hal Elrod. He wrote his best-selling book called The Miracle Morning. And he talks about following the savers technique the moment you wake up in the morning, before you go to your office or you go for your work. First, be in silence. आप साइलेंस में 2 मिनट रहना चाहते हैं, 5 मिनट, 10 मिनट, वो आपकी मर्जी है. बी इन साइलेंस. राइट योर एफर्मेशंस. आप एफर्मेशंस पे भी मैं बहुत बड़ा सेशन ले सकती हूँ, बट अगर आपको नहीं पता, यू कैन जस्ट गूगल अबाउट इट. एफर्मेशंस होते हैं पॉजिटिव स्टेटमेंट्स बोलना खुद को, राइट? थर्ड, विजुअलाइजेशन. आप जो अचीव करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आज मेरा कोई इंपॉर्टेंट काम है और मुझे बहुत डर लग रहा है, बट अगर आप आंखें बंद करके विजुअलाइज कर लेंगे एग्जैक्टली जो आप चाहते हैं कि मेरे साथ काश ये हो आज ऑफिस में, तो अगर आप वो विजुअलाइज कर लेंगे सारी सेटिंग्स को 5 मिनट्स तक अपने माइंड में मूवी बना के, तो आपने क्योंकि उसे विजुअलाइज कर लिया, तो आपके चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे कि जब आप रियलिटी में वो इवेंट कंडक्ट कर रहे हैं अपनी ऑफिस में, तो आपको डर कम लगेगा, और आपने जो अच्छा इमेजिन किया था ना अपने माइंड में, वही रिजल्ट आने वाला है. सो विजुअलाइजेशन बहुत अच्छी प्रैक्टिस है अगर आपको अपनी पर्सनालिटी को इम्प्रूव करना है. ये सारी चीजें सेल्फ केयर में आती है. नेक्स्ट, एक्सरसाइज. एक्सरसाइज करने से गुड हार्मोन्स रिलीज होते हैं, हैप्पी हार्मोन्स इन द बॉडी, और हैप्पी लोगों के साथ कौन नहीं रहना चाहता, राइट? यू ऑल्सो वॉन्ट टू बी हैप्पी, सो डू फिजिकल एक्सरसाइज. जरूरी नहीं है बहुत स्ट्रेनस एक्सरसाइज, बट अगर आपको लग रहा है कि यू आर गेटिंग वेरी रेस्टलेस, वेरी ओवरवेल्म, सारा काम छोड़ के बस 2 minutes थोड़ा सा हाई वाइब्रेशन में स्टार्ट डांसिंग. इफ यू आर एट होम यू कैन डांस, बट इफ यू आर समवेयर इन द पब्लिक प्लेस, जस्ट सी कि आप थोड़ा सा मूव करो अपनी बॉडी को, एंड जस्ट क्विकली टेक सम स्टेप्स. क्योंकि जैसे ही आप फिजिकली मूवमेंट करोगे, वो क्या होता है, फिजियोलॉजी आपकी चेंज होती है, एंड योर फिजियोलॉजी directly affects your psychology. Your physiology affects your psychology. इसलिए एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट, रीडिंग की हैबिट. अगर आप सुबह सुबह रीड कर पाओ बहुत अच्छी बात है. अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप दिन में कभी भी रीड, बट कुछ आप रीडिंग की हैबिट जरूर रखिए. एंड नेक्स्ट, स्क्राइबिंग. स्क्राइबिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. लाइक somebody mentioned, I think Mansa, she mentioned about writing her thoughts in her notebook, whether positive thoughts or negative thoughts. आपको जो भी लिखना है, जो आपको परेशान कर रहा है, जो आपके साथ अच्छा हो रहा है, सबको डायरी में लिखो. एक डायरी पॉजिटिव डायरी बनाओ, मिरेकल डायरी नाम रखो उसका, और एक डायरी में सिर्फ अपने anything which is bothering you, write down. Keep writing it down. You don't need to share it with anyone. Keep it secret. Okay? अगर आप स्क्राइबिंग करोगे, आप खुद देखोगे कि आपको कितनी क्लैरिटी मिल रही है कि आप कैसे सोचते हो, और जैसे आपको क्लैरिटी मिलनी स्टार्ट हो जाएगी, आप बहुत अलर्ट हो जाओगे कि आपको कैसा सोचना है, कैसा बिहेव करना है अपनी लाइफ में. और जब आपकी थॉट प्रोसेस चेंज होती है, तो आपकी पर्सनैलिटी में चेंज आएगा या नहीं आएगा. तो स्क्राइबिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. चीजों को अगर आप माइंड में रखोगे तो आप कंफ्यूज रहोगे. अगर आपको अपनी लाइफ में क्लैरिटी चाहिए, नोटबुक में सारी चीजें लिखना स्टार्ट करो. इट इज नॉट अ वेस्ट ऑफ टाइम. बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है. ओके, सो आई एंड द सेशन हियर टुडे. And these were a lot of things that we learned. Savers, silence, positive affirmations, visualize करो अपने फ्यूचर को, एक्सरसाइज करो, रीड करो, और अपने थॉट्स को लिखो. कभी ये मत सोचो कि मैं लिखूंगी या लिखूंगा तो टाइम वेस्ट हो जाएगा, अरे कुछ और कर लेता हूँ, मुझे तो पता ही है ना मेरे माइंड में क्या है. I always used to think like this, but the day I started taking writing seriously, my life started to change. Writing बहुत important है, right? Okay, and we'll get to know where we are positive thoughts in
Okay, thank you for sharing. So thank you for sharing the feedback, Manasa. It's been really okay. Thank you. Yeah. So any questions now? Any questions? Any question you want to ask regarding personality? Ma'am, I guess the participant will ask the question after some time. Okay. Ma'am, first of all, ma'am, I just want to say that thank you for this session, and I hope our participant learn many new things from this session. Yeah. And ma'am, there are some Okay. few questions which our participant want to know. So, Sure. start, ma'am. Shall we start? Yes, please. Ma'am, the first question which our participant want to know is that how can someone identify their leverage to strength for their work? How can someone identify? How can someone identify their strength and weakness to their job or the work? Okay. So the question is, how can we identify our strength and weakness regarding the job or our work? Okay. Yeah. So for this, there is a SWOT analysis. SWOT. Strength, weakness, opportunity and threat. आप इसके बारे में थोड़ा सा रिसर्च कर सकते हो. SWOT analysis you can do for yourself. There are certain tests also which are available for this online also. And जब आप SWOT analysis करोगे and you go through the questionnaire, you will yourself identify through that questionnaire कि आपकी strength क्या है, आपकी weakness क्या है. But बहुत simple चीज मैं बताऊंगी, अगर आपको SWOT analysis की भी जरूरत नहीं पड़ेगी. खुद से connection create करो. Create connection with yourself. As I said, do this savers technique. Silence. Sit in silence. जितना आप अपने आप को कंफर्टेबल फील करोगे साइलेंस में, एंड यू विल नॉट नीड अदर पीपल अराउंड यू, यू विल बिकम मोर कनेक्टेड टू योरसेल्फ. और उस दिन आपको पता चलेगा कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है और आपकी वीकनेसेस क्या है. सो यू कैन स्टार्ट. आप एक डायरी ले सकते हो और उसमें बचपन से लेकर अब तक, फ्रॉम योर चाइल्डहुड टिल नाउ, आपने क्या क्या अचीवमेंट्स करे हैं, चाहे वो छोटे अचीवमेंट्स हो या बहुत बड़े हो, सब लिखना है. छोटे अचीवमेंट्स को इग्नोर नहीं करना है. जैसे आप यू विल बिकम केयरफुल अबाउट योर अचीवमेंट्स, तो आप खुद सोचो कि मैंने ये चीज क्यों अचीव की थी. तो यू विल से हाँ, एट दैट मोमेंट आई यूज्ड टू रिमेन हैप्पी, सो दैट मींस हैप्पीनेस वाज योर स्ट्रेंथ. Then you will say, okay, I was very patient and I used to study with lot of focus. That means patience and focus was your strength. But अगर आप अपनी failures को reflect करोगे बचपन से लेके अभी तक, right? So you don't have to look at your failures with a negative mindset. Failure is a part of the success. तो जब आप लिखोगे सारे failures जो आपके तरीके से जो चीजें execute नहीं हुई, उसमें you find out कि क्या ऐसी चीजें थी that I could not perform to my optimum level. You yourself ask yourself. आपको आंसर मिल जाएगा कि आपकी वीकनेस क्या थी. सो कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, बस आपको खुद से कनेक्ट करना है, अपने अचीवमेंट्स और अपने फेलियर्स को लिस्ट डाउन करना है. गिव योरसेल्फ 1 hour और सारी चीजें उसकी डीप रूट आपको रीजंस मिल जाएंगे. व्हाई यू अचीव समथिंग, इट वाज बिकॉज ऑफ द स्ट्रेंथ. व्हाई यू कुड नॉट अचीव समथिंग, बिकॉज ऑफ योर वीक. एंड देन second thing is take feedback from people. So who you think they are genuinely interested in your growth, जो आपको सही feedback देंगे. ये नहीं कि वो हमेशा आपको अच्छा बोलेंगे. So find some people in your life जो आपको real feedback दे सके, आपको motivate भी कर सके, और आपको they can show you the mirror. If something was not right with you, they can tell you that, see, this is something I feel you can improve. So find those people and keep on taking feedback from them. Okay, ma'am, the next question is that how self-discipline plays important role in achieving the long-term personal and professional goals. Yes, nice question. Self-discipline definitely plays very, very high role here. Okay, motivation will not take you ahead for a longer period of time. Now here I took the session. Some might have got motivated, some might not have, but अगर आप motivate हुए तो आप कुछ time तक motivated रहोगे, क्योंकि एट द एंड आपको डिसिप्लिन लाना पड़ेगा. सपोज मैंने आपको सेवर्स टेक्निक के बारे में ही बताया. ओके, यू विल सी हाँ मैम ने बताया, मुझे बहुत अच्छा लगा, आई विल फॉलो इट. तो आपको बहुत मन करेगा, एंड मे बी टुमारो यू विल फॉलो दिस, डे आफ्टर टुमारो, आफ्टर 7 days यू विल से अरे अभी टाइम नहीं है, अभी जल्दी आई विल गेट रेडी फॉर माई स्टडीज, फॉर माई कॉलेज एंड फॉर माई ऑफिस. एंड देन आपकी हैबिट छूट जाएगी. तो आपको खुद के डेमंस से डील करना है. जो आपके अंदर डीमंस है ना, जो भी आपके अंदर प्रोक्रेस्टिनेशन आ जाता है या लेजीनेस आ जाती है, आपको लगता है अरे कर तो लिया, कितनी बार और कितनी बार करूं, तो ये सारी चीजों को आपको अंदर से डील करना है.
and then you will develop discipline. Discipline एक बहुत अच्छी क्वालिटी है गुड पर्सनालिटी, क्योंकि जो लोग डिसिप्लिन होते हैं एट द एंड आपकी कंसिस्टेंसी बढ़ती है जब आप डिसिप्लिन होते हो. अगर आप डिसिप्लिन नहीं होगे तो आपकी कंसिस्टेंसी नहीं बढ़ पाएगी उस हैबिट में, तो आप अपने गोल की तरफ नहीं जा पाओगे. ओके, जैसे अगर मैं बोलूं somebody wants to lose weight, तो जिम ट्रेनर उन्हें बोलता है कम फॉर 5 days a week. बट अगर आप 2 months तो रेगुलर जाओ, 5 days a week आप 2 months जाओ और आप कहो वाओ आई एम इन गुड शेप, आई एम फीलिंग कॉन्फिडेंट एंड फुल ऑफ स्ट्रेंथ, उसके बाद 1 month तक आप नहीं जाओ तो आपकी बॉडी फिर से दोबारा वैसी पहले जैसी हो जाएगी, बिकॉज एवरीथिंग रिक्वायर्स कंसिस्टेंसी. If today I brush my teeth, I can't say I'm brushing my teeth since childhood, now I will not brush. It is a consistent process. I need discipline. So अगर आप discipline develop करते हो तो consistency आती है और आपके goals, आपकी success rate definitely बढ़ती है उसमें. Yes, I will. You can write in the chat box. I'll take up one question which is sent by Sujata. So she's asking how to overcome being low when I could not deal with the people of not my kind, which I often face. Okay. So I want to tell you that this is it's a very common question that you have asked. A lot of people ask this. In fact, I have also faced the similar situation in my life. I will say that we will never get people of our type always. Okay, not always. Sometimes you will be very lucky where you will find people of your type and you will gel well with them. You will feel very positive. But there will be times when you will get people who will not be of your type. In that case, I'll explain you. See, this is an event which is happening with you. वो आपका event आपके control में नहीं है. आपको कौन लोग मिलते हैं आपकी लाइफ में, you have no control over it. But if they are not of your type and आपको उनसे बात करके अच्छा नहीं लग रहा है या फिर उनके environment में रहना अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप क्या करो, आप अपने response पे focus करो. Focus on your response. Because response आपके हाथ में है, event आपके हाथ में नहीं है. Right? So how will you focus on response? Create boundaries with those people. अगर आपको low feel हो रहा है उन लोगों के साथ कि वो आपकी बात नहीं सुनते, आपके टाइप की नहीं है, just create boundaries with them. Like that means they should not be taking you for granted. और अगर आपको उनकी कोई बात अच्छी नहीं लग रही, you can wait to them that see you are speaking in this manner. I do not really appreciate it, and I would want you to not speak to me like this. We can speak in a more professional manner here. And so you can always convey to them what are your boundaries. Like suppose कोई आपसे अच्छे से नहीं बात कर रहा and आपको वो नहीं अच्छा लग रहा, लेकिन आप उन्हें नहीं बोल रहे, तो उन्हें तो नहीं पता चल रहा कि आपको नहीं अच्छा लगा. So they will keep on doing that and then you will keep feeling bad. So it's very important कि जब आप boundary set कर लोगे तो आपको पता है कि आपको क्या चीज अच्छी लग रही है और क्या नहीं. And if you're not liking how they are behaving with you, you can always go and tell them in a polite manner. But yes, if you could elaborate your question, like could not deal, where you said, you know, I could not deal with the people. So I could not deal also has lot of meanings, right? So if you can elaborate on the question, I'll be able to answer it better. Ma'am, I have shared the question in the chat box, ma'am. Can you share some example of Okay, can you share some examples of how individuals have successfully overcome limiting beliefs and self-doubt during their personality? Absolutely. Okay, so I'm really happy to share some of the examples which I have come across people personally. One person that I worked with, they had this limiting belief of not having good communication skills. But one day when I met them, as I told you, right, I will be if I select some people here, they can speak to me on a one-to-one call. So when they came for a one-to-one call to me, they told, ma'am, I want to improve my communication skills. I do not feel confident. And then they were speaking nicely to me in English. So I could understand that the way they are speaking, it's not a very stylish accent, but whatever they are speaking nicely. And they were not taking a lot of pauses also to think. So I told them, what makes you think that you're not good in communication skills? So they told me that, ma'am, for my entire schooling and my college, I have, for my entire schooling, I studied in the local regional language. And when it was the time for college, I knew then I started, I exactly went to the college where people used to speak English. So I got very scared and then I had to level myself up to deal with the challenges and I started speaking it. But I still have that fear and I have been working in the corporate for the last 15 years. I'm able to communicate, but I have the fear. Whenever I have to speak to the manager, I shiver.
So this was their limiting belief. वो इतना अच्छा इंग्लिश बोल रहे थे, like मैंने खुद देखा, but they had the limiting belief कि उन्होंने बचपन से, क्योंकि इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई नहीं करी, so वो उनके माइंड में वो थॉट, वो एक बिलीफ था. So I worked with them for a 4-month long journey, for a 3 or 4-month long journey, and we did a lot of inner work. So how do we overcome the limiting beliefs? By working on by doing the inner work. And उसमें बहुत सारी practices होती हैं. There are some healing practices we do, and there are coaching practices we do. And वो सारी activities मिलके, आप सोचो अगर आप किसी इंसान को बोलो कि 3 से 4 months के लिए आप ऐसा follow करो, whichever I am asking you to do. You change their lifestyle, you change their behavior, you work on their thought patterns, you give them new exercises to do, and finally they were able to overcome the limiting belief. But again, I will say that you can surely overcome limiting beliefs, but if you overcome one limiting belief, another limiting belief will come up in your journey. क्योंकि limiting beliefs का कोई एक, they are infinite. अगर आपको लगेगा कि मैंने सारा fear overcome कर लिया, I've overcome anxiety, I've overcome low confidence, I've overcome self doubt, कोई ना कोई ऐसी चीज आपकी लाइफ में आ जाएगी जहां आपको फिर से सेल्फ डाउट आएगा, फिर से कोई लिमिटिंग बिलीफ आ जाएगी, एंड यू विल फील लिटिल ट्रैप्ड एंड यू विल नॉट बी एबल टू परफॉर्म टू योर ट्रू पोटेंशियल, व्हिच इज एब्सोल्युटली नॉर्मल. तो अगर आप इनर वर्क करते हैं, ओके, व्हिच इज अ वेरी डीप वर्क, उससे आप अपनी लिमिटिंग बिलीफ्स को ओवरकम डेफिनेटली कर सकते हैं. बट ये मत सोचिएगा कि अब तो आई हैव बिकम अ चैंपियन, आई कैन नेवर हैव एनी लिमिटिंग बिलीफ्स. लिमिटिंग बिलीफ्स कीप कमिंग. You have to fight your demons every single day. Okay, so this was one example that I can share here. One of the examples I know is someone had the fear of talking to their manager, and only with one specific person they had the issue of speaking to them, and but with everyone else they were absolutely fine. But so they never had any communication skills wala issue, never. But only when that specific person came in front of them, because they put that person on a pedestal, and okay, he is my manager and he is senior to me. So जब आप किसी को ये सोच लोगे कि अरे ये मेरे मैनेजर हैं और इनको तो मुझसे ज्यादा आता है and I am nobody in front of them, तो आपका कॉन्फिडेंस लो होने लग जाएगा. तो ये एक लिमिटिंग बिलीफ है. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि सामने वाला भी इंसान ही है, दे आर ह्यूमन बीइंग्स ओनली, एंड इफ यू आर फीलिंग अ सर्टेन वे, then you have to just overcome the limiting belief in mind, kuch practices karke, and you can actually speak to anyone with a lot of confidence. So these were, yeah, some of the examples. I hope it was helpful. Thank you so much, ma'am, for answering all the questions. I hope our audience got their answers. Thank you so much, everyone, for attending today's webinar. I hope you all liked today's webinar. Each and everything shared in the webinar was a good piece of advice. As we come to the end of our personality development journey, I hope you feel inspired and empowered to make positive change in your personal and professional lives. Remember that growth is a continuous process, and it's okay to take small steps towards your goal. Let's apply the knowledge and wisdom gained today to transform ourselves and make a positive impact on the world around us. Thank you so much, ma'am, for being with us. Again, thank you all for attending today's webinar. If you have any additional question, you can contact us by email or telephone. We are happy to provide additional support to you. Please follow our social media handles and subscribe our YouTube channel for new learning. Thank you so much. Thank you, ma'am, for joining.